Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to do a very important topic of literary criticism and theory, MEG 05, a very important and compulsory subject for MA English students of Indira Gandhi National Open University. We will understand postmodernism in literature, all the features with the help of examples. If you join the membership of the channel, you can get access to almost all important topics of this subject. 15 to 16 videos are given there on various topics from all the blogs like deconstruction, feminist theories, Marxism, all the topics of new criticism and many more videos you will find here. आपकी properly बहुत अच्छे से preparation हो जाएगी if you join the channel subscription. Please do not forget to like, share and comment upon this video. सबसे पहले समझते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर है क्या. Postmodernist literature is a type of literature that is described by the use of these characteristics. इन characteristics को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी. मेटाफिक्शन, unreliable narration, self-reflexivity, intertextuality and magical realism. Magical realism and along with all these points there are some more features which thematizes historical and political issues. इन सभी चीजों को historical और political issues के through दिखाया जाता है. To know about the time period as well, postmodernism is a term for a literary genre and style that emerged in the second half of 20th century. Salman Rushdie's Midnight's Children is I think one of the most famous novels and is included in 100 best novels as well. पहले Midnight's Children को थोड़ा सा जानते हैं और Midnight's Children में किस तरीके से सारे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के, वो भी जानेंगे. Midnight's Children, सलमान रश्दी का लिखा हुआ बहुत ही फेमस नॉवेल है. रिसेंटली सलमान रश्दी पर एक अटैक भी हुआ है. दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट. लेट अस कम टू द नॉवेल. So this novel is concerned with the life of Salim Sinai, the protagonist, who is born at the midnight on August 15, 1947. A very good example of postmodernist text. Rushdie seeks to challenge the conventional narrative through the blurred boundaries of discourse, through textual play, through explicit or implicit parody, and through the hybridization of language. बिल्कुल कन्वेंशनल मैनर में नहीं लिखा गया है, बहुत कुछ पैरोडी किया गया, बहुत सारे इन फीचर्स को इंक्लूड किया गया बहुत ही एक्सप्लिसिटली. कुछ पैरोडीज जो है वो थोड़ी सी इम्प्लिसिट हैं, कुछ पैरोडीज जो है वो बिल्कुल एक्सप्लिसिट हैं और लैंग्वेज ऐसी यूज की गई है which can easily be understood by normal people. तो सबसे पहले आते हैं मेटाफिक्शन की तरफ. मेटाफिक्शन इस वर्ड का ही मीनिंग है कि यू आर बीइंग गिवन द फील दैट यू आर रीडिंग समथिंग. ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो कि रियलिटी में पॉसिबल है. जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ के आपको थोड़ी सी हैरानी होती है. हैरानी इसलिए कि आपको लगता है कि ये फिक्शन है, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं हो सकता. So often most closely associated with postmodern prose, metafiction involves a departure from standard narrative conventions. Standard conventions नहीं होते. Self-aware narrator होता है, infuses their perspective into the text to create a fictional work that comments on fiction. Let me tell you in simple language, metafiction is a form of fiction which emphasizes its own narrative structure in a way which continuously reminds the audience as if they are reading or viewing a fictional work. इस तरीके से काम को लिखा जाता है, इस तरीके से टेक्स्ट को लिखा जाता है कि रीडर्स को थ्रू आउट रीडिंग याद रहता है कि दे आर इनटू सम फिक्शन. जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत रियल नहीं है, उससे अटैच होने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज फिक्शनली क्रिएटेड. अब देखते हैं कैसे सलीम की लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है. सलीम सिनाई, आई सजेस्ट कि पहले आप ये नॉवेल जरूर पढ़ लें, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, तब आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा. Salim's personal life seems to be starkly related to the political fate of the nation right from his birth time.
उनका coincidental birth at the precise moment of India's independence lends him magical powers of telepathy and olfaction. Olfaction is the extreme great sense of smell. टेलीपैथी के साथ पैदा हुए हैं, ग्रेट ऑल्फेक्शन पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी. He can have a parliamentary conference with other midnight children, sneak in the people's mind, and has a strong canine-like smelling power. Many historical events are also included: World War I, independence, emergency, and many wars of India. तो ये सब कुछ एक ही नॉवल में इंक्लूड किया जाना, और एक पर्सन है जो इन सबको एक्सपीरियंस कर रहा है. वर्ल्ड वॉर वन के बारे में भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसी पर्सन को, इंडिपेंडेंस का भी एक्सपीरियंस हो रहा है, बॉर्न एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इमरजेंसी पीरियड, सभी वॉर्स, पार्टीशन, शिफ्टिंग टू पाकिस्तान. तो एक ही पर्सन सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, प्लस उसके पास मैजिकल पावर्स ऑफ टेलीपैथी और ऑल्फेक्शन भी है. दिस मेक्स द वर्क अ मेटाफिक्शनल वर्क. हमें ऐसा लगता है कि दिस इज सम फिक्शनल वर्क. कंटिन्यूसली याद आता है रीडर्स को कि फिक्शन पढ़ रहे हैं. अनरिलायबल नरेशन, द नेक्स्ट फीचर. इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. According to Hindu tradition, the elephant Lord Ganesha, is very fond of literature, so fond that he agrees to sit at the feet of Vedvyasa and takes down the entire text of Mahabharata from start to finish. In Midnight's Children, Salim Sinai makes a reference at one point to this old tradition, but his version is a little different. According to Salim, Ganesha sat at the feet of poet Valmiki and took down Ramayana. And anybody who is aware of this Hindu tradition will find Salim to be an unreliable person. So many other unreliable facts, unreliable events are also there in this novel, like Lata Mangeshkar is mentioned in the time of 1946. How could Lata Mangeshkar be found singing on All India Radio in early 1946? एक ट्रेन का भी इवेंट है, एक कैरेक्टर है पिक्चर सिंह. अगर आप नॉवल पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. The train that brings Picture Singh and Salim from Delhi to Bombay possibly have passed through Kurla. दिखाया गया है, which is on a different line. Kurla is actually on a different line. It is not possible for a train from Delhi to Bombay to pass through Kurla. तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे जिनको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि अरे ये थोड़ी पॉसिबल है, ये तो कुछ अनरिलायबल इवेंट है. क्या हम सलीम पर यकीन करें जो कुछ वो बता रहे हैं सही है या नहीं? नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी. सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है? एक नॉर्मल इंग्लिश टर्म है ये तो. दिस इज द एबिलिटी टू विटनेस एंड evaluate our own cognitive, emotional, and behavioral processes. Most postmodernist narratives have great self-reflexivity, which means that they double back, double check on their own presuppositions, assumptions, and ways of telling story. अपनी स्टोरी बताते हैं, फिर पास्ट पे रिफ्लेक्ट करके उसको एक बार रिव्यू भी करते हैं. The self-reflexivity and complexity of Midnight's Children places the novel with a space of postmodern writing, making it accessible almost exclusively to an educated few. सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी आपको बहुत अच्छे से नजर आएगी आर के नारायण की द गाइड में, विच वॉन द फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड. तस्लीमा नसरीन की लज्जा में, फॉर विच शी वॉज बैनिश्ड. Salman Rushdie की Midnight's Children. Salman Rushdie is also banished, but not for Midnight's Children, for satanic verses. All these novels, The Guide, Lajja, and Midnight Children, all these novels employ a self-reflexive narrative mode as a counter discursive strategy. जो कुछ भी बात कही जा रही है उसको पास्ट में जाकर एक बार चेक करते हैं, या फिर पास्ट का कोई इवेंट साथ साथ हमें बताते रहते हैं. अपने ही एक्शन पर एक तरीके से खुद ही रिएक्शन दे रहे हैं. जो भी स्टोरी हमें बता रहे हैं उसको किसी ना किसी तरीके से डबल चेक किया जा रहा है. फ्लैशबैक नैरेटिव्स बहुत ज्यादा हैं. नेक्स्ट कम्स इंटरटेक्सचुअलिटी. इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब है कि आप अपने करंट टेक्स्ट को शेप अप कर रहे हैं बाय यूजिंग एल्यूजन्स, कोटेशंस फ्रॉम सम अदर वेरी फेमस टेक्स्ट. एग्जाम्पल देखते हैं मिडनाइट में.
Salim notes that 1001 is a magical number. Scheherazade, the heroine of the Arabian Nights, tells 1001 stories in order to delay her execution. और यहाँ पर 1001 मिडनाइट चिल्ड्रन दिखाए गए. जैसे ही हम लोग रीडर सुनते हैं 1001 दिस नंबर, तो हमारे दिमाग में एकदम से अरेबियन नाइट्स की 1001 टेल्स आती. दिस इज वन ऑफ द इंटरटेक्सचुअलिटी. और साथ ही साथ इंटरटेक्सचुअलिटी में साथ ही साथ हिस्टोरिकल इवेंट्स और रियल पर्सनेजेस को भी यूज किया जाता है, लेकिन इन अ पैरोडी वे. Whole novel Midnight Children is a historical chronicle of modern India. General Zulfikar is the husband of Emerald. Zulfikar Ali Bhutto, real person in Pakistan. वी विली वेंकी स्कॉटिश नर्सरी राइम, और यहाँ पर हमारी मिडनाइट चिल्ड्रन में भी वी विली वेंकी नाम का एक कैरेक्टर है. तो कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको देखकर हमें किसी और टेक्स्ट की याद आती है. दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरटेक्सचुअलिटी. And the most important is magical realism. मैजिक रियलिज्म और मैजिकल रियलिज्म, इससे रिलेटेड एक डिफरेंट वीडियो भी है जिसका रेफरेंस आपको ये वीडियो करते करते टॉप में मिल जाएगा. इन मिडनाइट चिल्ड्रन मैजिक रियलिज्म को बहुत अच्छे से यूज किया गया. दिस टर्म रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग द realistic depiction of events and characters with elements of fantastic, often drawn from myth, dreams, and fairy tales. रियल लाइफ के साथ साथ जादू को भी यूज किया जाता है. एंड पीपल आर नॉट वंडर टू सी दैट दिस इज हैपनिंग. दैट इज कंसिडर टू बी अ वेरी नॉर्मल डे टू डे काइंड ऑफ routine. In Midnight Children, Rushdie makes considerable use of magic realism. In an Indian setting, he combines fantasy and fiction. Salim possesses the magical abilities of smell and telepathy, which are shared by all the Midnight Children. The whole story, I'll say, is evinced by numerous individuals who are gifted with magical powers. Salim has the magical power of smell and telepathy, and these special powers are characteristic of all Midnight Children too. This gives the readers an insight into the psychological and mental state of the people in post-colonial era. The children possess supernatural powers such as Salim की telepathy, Shiva के powerful knees, and the power of other children like teleportation, the ability to change gender, time travel. बहुत सारे बच्चों के पास ऐसी power है. एक और prominent character है पार्वती. Parvati the witch is one of the Midnight's children and the only one to become a friend and later wife of Salim. She is a child who is living in a ghetto in New Delhi and can perform real magic. किसी भी तरीके का मैजिक, किसी को इनविजिबल करना, अपनी शेप चेंज करना, या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना, ऐसा कुछ भी वो अपने मैजिक से कर सकती हैं. सो मैजिकल रियलिज्म फीचर्स को बहुत ही अच्छे से इंक्लूड किया गया है मिडनाइट चिल्ड्रन में. So all these points can really make a very good answer. Metafiction, unreliable narration, self-reflexivity, intertextuality, magical realism, and do not forget that this emerged in second half of 20th century. Also, let me remind you that you can get access to another 15-16 major topics of this subject by joining the subscription of this channel. If you join the membership of the channel, you can get access to almost all important topics of this subject. 15 to 16 videos are given there on various topics from all the blogs like deconstruction, feminist theories, Marxism, all the topics of new criticism, and many more videos you will find here. आपकी properly बहुत अच्छे से preparation हो जाएगी if you join the channel subscription. You may join the classes to cover the regular live classes with us. Every topic will be covered in detail. Can click the link in description to get connected for admission purpose. Thanks for watching. Best of luck for exams.